गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप मेलचिम्प के थ्रू आप अपना ईमेल कैंपेन कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो है मेलचिम्प की आईडी ये ट्रायल आईडी है। इसमें हम लोग को 3 चांसेस मिलेंगे। सो अगर 3 से ज़्यादा अगर हम लोग को मेल कैंपेन करना है, अपना ईमेल मार्केटिंग कैंपेन करना है, तो हम लोग को मेलचिम्प का प्रीमियम अकाउंट बाय करना पड़ेगा। तो हम लोग अपना पहला ईमेल क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू क्लिक क्रिएट ईमेल एंड नाउ एज यू कैन सी टू ऐड रेसिपिएंट। तो यहाँ पे हम लोग ईमेल आईडी डालेंगे उन इंडिविजुअल्स की जिनको हम लोग को मेल भेजना है। ओके, सो कई लोगों को इशू इसमें आती है कि इंपोर्ट कैसे कराएं। तो अगर आपको 1, 2 या 3, 4, 5 लोग को भेजना है तो आपको इंपोर्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप टेक्स्ट फाइल बनाएं और उसका इंपोर्ट करें। आप सीधे कॉपी एंड पेस्ट पे क्लिक करिए, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करिए और यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे फिर इसका कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज कर दीजिए। प्लीज इसको क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा क्योंकि फ्री ट्रायल मिलते हैं, तो मेक श्योर कि आपका ट्रायल बर्बाद ना हो जाए। कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज पे क्लिक करिए एंड आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट इंपोर्टिंग। तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटस तो सब्सक्राइब, कंटिन्यू टू टैग। अब हम लोग को यहाँ पे टैग चूज करना होगा। तो ये हम लोग कस्टमर हैं एंड कंटिन्यू टू मैच। अगर आपको और कोई भी टैग यूज करना तो यू कैन यूज पर्टिकुलर टैग्स ऑल्सो। और यहाँ पे फिर से क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग को दिखा रहा है, तो ठीक है। फाइनलाइज इंपोर्ट, तो हम लोगों ने अपना फिर कंप्लीट इंपोर्ट और हम लोगों ने अपना रिसिपिएंट ऐड कर लिया है। अब हम लोग को कैंपेन क्रिएशन में दोबारा वापस जाना है। तो एज यू कैन सी फर्स्ट स्टेप हम लोग का हो गया है। नाउ सेकेंड स्टेप इज फ्रॉम, हु इज सेंडिंग दिस कैंपेन। तो ऐड फ्रॉम पे क्लिक कीजिए और आपका ऑलरेडी नेम और ईमेल एड्रेस लिख के आ जाएगा। जस्ट क्लिक हिट बटन, आई मीन सेव बटन, दैट्स इट। आपका फ्रॉम भी हो गया। अब सब्जेक्ट, ऐड सब्जेक्ट। सो ये मेरे कॉलेज का प्रोजेक्ट है, तो मैं सब्जेक्ट ऐसे कुछ भी रैंडम डाल दे रहा हूँ। तो सेव पे हिट कर दें। Of content, how our email is going to look. So we are going to design email. We have to click on design email and after that we have to select the classic builder. New builder is basically in the beta stage, so I'll suggest don't use the new builder or may face any type of bugs in it. So use classic builder. And now you have to select template from the following. First of all, I would like to tell you that only first 2 templates are free and all the other templates requires the premium version. So we are going to use the first version. So let's click on the first one. Now it will import the template. Now we just have to edit all the things. Okay, so let me show you. I don't want logo, so I will remove the logo. Okay, showcase your product. So
It's Tech Mobile Private. Okay, private. Okay. So now I have to add cover photo in my header. So what I have to do, I will just download the image of some mobile images. Click on images. You will get. So as you can see, I have created my email marketing campaign template, and this is what it looks like. And I know it's very plain, and but still I don't want to invest so much time in it. So as you can see, I have all the subscribe contact in the audience has been imported. So everything to, from, subject, content, everything is checked marked. Now I just have to hit the send button, and all the mail or the mail will be sent to the your targeted audience. That's it. Now I'm going to click the hit the send button. Okay, so Tech Mobile Private Limited is going to send 3 mails to the individual. So send now. Just wait for a few seconds, and it's out there. Yeah, it's done. So thank you for watching my video, and if you like my video, please don't forget to hit like and don't forget to subscribe, because it encourages me a lot. Thank you. Have a nice day.